Yesterday we started the ceramics industry. We talked about this that ceramics are clay products or silicate industries uh, which have fine finishing. There are of many types like whitewares, structured clay products, refractories, specialized ceramic products, enamels and enamel metals. So we talked about them in detail, that what are ceramics and how they are classified based upon their design or the work which is performed on it. So today we will be taking the history and the other industrial processes in ceramics industry. History of ceramic. Ceramics is one of the most ancient industries going back thousands of years. Once human discovered that clay could be found in abundance and formed into objects by first mixing with water and then firing, a key industry was born. So people learned about this uh, thousands year back, that you can convert the material, the clay material into some pottery materials. मतलब ये कि आप क्ले से कुछ बना दें और फिर इसको वाटर के साथ मिक्स करें और फिर इसको आग में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो इससे सिरामिक बनते हैं। तो लोगों ने इसके बारे में मतलब जानना शुरू किया बहुत पहले से। द ओल्डेस्ट नोन सिरामिक artificer is dated as early as 28,000 BC. BCE, before Common Era. During the late Paleolithic period, it is a statue of a woman named the Venus of Dolny, Vestonis, from a small prehistoric settlement near Brno in the Czech Republic. So this lady, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पहले सिरामिक्स की इंडस्ट्री का वो आगाज़ किया। Her name is Tolni Wistonis. In this location, hundreds of clay figurines representing Ice Age animals were also uncovered near the remains of a horseshoe-shaped kiln. So she also designed the kiln for the ceramics. ठीक है, इन इस लेडी ने इसकी लिए किलन भी डिज़ाइन किया था और इससे ये पुराने ज़माने के जो एनिमल्स थे उनके डिज़ाइंस बनाती थी और उसको सिरामिक्स में कन्वर्ट करती थी। द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉटरी अपीयर्ड इन ईस्टर्न एशिया सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। और जब हम ये बात करते हैं कि जो ये चाइना वेयर्स जिनको कहते हैं, चाइना के जो बर्तन होते हैं, सो दे अपीयर्ड थाउजेंड्स ईयर लेटर आफ्टर दिस। ये जो लेडी है इसने काम किया था, जो चेक रिपब्लिक में इसका लोग समझते हैं कि इसका जो आगाज़ था वो चेक रिपब्लिक में हुआ। इन द जियान Jianrendong cave in China, fragments of art dated to 18,000 to 17,000 BCE have been found. It is believed that from China, the use of pottery successively spread to Japan and the Russian Far East region, where archaeologists have found shards of ceramic artifacts dating to 14,000 BCE. So this ceramics industry. This started in Czech Republic, then it went to China in 18,000 to 17,000 BCE, and then it is spread it to Japan and Russia in 14,000 BCE. So what are the uses of ceramics? Why we are converting clay products to ceramics? So there are definite uses for ceramics which make them specialized and important industry, one of the important industries. What are the uses of them? So these are ceramic products are hard, porous and brittle. They are having these properties. The first thing is they are hard.
The second thing is they are porous in nature. And the third thing is they are brittle. When you मतलब ये easily break हो सकते हैं. As a result, they are used to make pottery, bricks, tiles, cements, and glass. Ceramics are also used at many places in gas turbine engines. Bioceramics are used as dental implants and synthetic bones. अब इनके जो ये जनरलाइज्ड यूजेस हैं वो ये हैं कि ये पॉटरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं. पॉटरी मींस द किचन वेयर्स. ब्रैक्स में यूज़ होते हैं जो किलन में बनाए जाते हैं एंड देन दे आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस. टाइल्स में यूज़ होते हैं, सीमेंट्स में यूज़ होते हैं, ग्लास में यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा ये गैस टरबाइन के इंजन्स में यूज़ होते हैं. जो बायोसेरामिक्स हैं वो हम दांतों के फिलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इससे सिंथेटिक बोन्स भी बनाए जाते हैं, इनसे हड्डियाँ भी बनाई जाती हैं. So they are very useful in day-to-day life. So we are producing ceramics on daily basis. Why ceramic is important? Ceramic-based objects are useful because it is cheap to buy. It can be made into many things, and although it is fragile and brittle, it is a yet strong product. Some popular ceramic products are kitchenware like plates, mugs, knives, and even ceramic cooktops. Because ceramic is heat resistant, is a thermostat and a thermoset. Ceramic material जो है ये important इसलिए हैं. The first thing is they are cheaper to buy. आजकल तो खैर cheaper नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में ये बहुत cheaper हुआ करते थे. आजकल तो प्लास्टिक के बर्तन आए हुए हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं rather than ceramics, which is very bad. लेकिन फिर भी उन प्लास्टिक के बर्तनों में आप ज़्यादा हीटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं डाल सकते. इसके अलावा आप उनमें कुकिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन सिरामिक्स में आप कुकिंग कर सकते हैं. सो based upon their importance, they are cheaper to buy. They can be converted to many things. मतलब हम इसको बहुत सारे मटेरियल्स इनसे बना सकते हैं जो सिरामिक्स के होते हैं. और इसके अलावा किचन वेयर जो प्लेट्स होते हैं, मग्स, नाइफ्स और जो कुकिंग टॉप्स होते हैं, ये सारे जो हैं इनसे बनाए जाते हैं सिरामिक्स के, क्योंकि इनमें जो है प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये एक तो ये हीट रेजिस्टेंट हैं और दूसरे ये थर्मोसेट्स की तरह काम करते हैं. So basic raw materials for the ceramic industry are the three main material used in making classic are triaxial ceramic products are clay, feldspar and sand. मतलब इनको triaxial ceramic products भी कहते हैं जिनमें clay, feldspar और sand होते हैं. ये तीन materials इनमें डाले जाते हैं ceramics में generally. Clays are more or less impure hydrated aluminum silicates that have resulted from the weathering of igneous rocks in which feldspar was noteworthy original mineral. अब क्ले जो है ये हमारे पास तो ये तो वेदरिंग से आते हैं क्लेस जितनी भी हैं. सो यू कैन गेट क्ले फ्रॉम द वेदर्ड रॉक मटीरियल. हर जगह पे मिलते हैं. और जब इग्नियस रॉक्स के जो क्लेज होते हैं उनमें आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पे मिलेंगे और इसके अलावा आपको feldspar में मिलेंगे. Traditional ceramic raw materials include clay minerals such as kaolinite, whereas more recent materials include aluminium oxide. पुराने ज़माने में जो क्ले थे उनमें तो ज़्यादातर काओलिनाइट मिनरल होते थे और जो आजकल हैं उनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं, known as alumina भी इनको कहा जाता है. The modern ceramic material which are classified as advanced ceramics include silicon carbide and tungsten carbide. और जो ज़्यादा हम जिनको मॉडर्न कहते हैं और एडवांस सिरामिक्स कहते हैं उनमें सिलिकॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड भी होता है. So you can say clay, feldspar and sand, they are the basic materials
लेकिन ट्रेडिशनल क्ले सिरामिक्स में आपको काओलिनाइट क्ले मिलते थे। मॉडर्न सिरामिक्स में आपको एल्यूमिना क्ले मिलेंगे, और जो एडवांस सिरामिक्स हैं उनमें आपको इनके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड भी मिलेंगे। The raw materials for pottery making can be divided into three categories. अगर हम वैसे जनरली देख लें तो सिरामिक्स बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। The first one is clay, the second one is temper, and the third one is mineral. Clay, this is the dominant material of the ceramics. और क्ले जो हैं वो आप लोगों को पता चल गया, पुराने वाले में काओलिनाइट और न आजकल वाले में एल्यूमिना वाली क्ले यूज़ होते हैं। टेम्पर, these are the additives used to control physical properties of the ceramics. So you can add these additives to control the physical properties, मतलब उनकी जो क्या कहते हैं अपीयरेंस है या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जैसे हार्डनेस है, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मिनरल्स टू इम्पार्ट अ ग्लेस, अ कलर और अदर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। और मिनरल्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि उनमें कलर आ जाए या उनमें कुछ और ऐसी खूबसूरती आ जाए। सो यू कैन classify generally the raw materials into these three types of the materials. Low-grade clays, those that do not make pottery without refining or mixing, are available almost every year. So the manufacture of building bricks and tile did not require much consideration of raw materials. अगर आप ऐसे जनरली क्ले को देखते हैं तो क्ले तो हर जगह पे होता है। सो लो ग्रेड क्ले जो होते हैं ये तकरीबन हर जगह पे होते हैं, तो इससे हम ब्रिक्स बनाते हैं, जो सिरामिक्स ब्रिक्स होते हैं। Clays have two important functions in the production of ceramics. First, their plasticity is basic to shaping the material in its green, unfired state. Second, clays fuse over a temperature range without the body losing its shape. क्लेज हम इसलिए डालते हैं सिरामिक्स में क्योंकि इसके दो फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ ये प्लास्टिक टाइप के होते हैं, मतलब प्लास्टिसिटी इनमें होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इनमें होती है। ये जब हम इनको मोल्ड कर देते हैं, इनसे शेप बना देते हैं, ठीक है। क्ले से लोग शेप बनाते हैं, लाइक मग है या ग्लास है या इवन जो कुकिंग वेयर्स हैं, मतलब देगचा है, इस तरह की, या कोई स्टैचू बना देते हैं। इससे आप क्ले से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन क्ले से जो आप बना देते हैं तो उस चीज़ को हम ग्रीन स्टेट कहते हैं। ग्रीन स्टेट मतलब अनफायर्ड स्टेट, वो उस पे उसको आपने किसी भी चीज़ के साथ ट्रीट नहीं किया, बस ऐसे ही ड्राई किया। सो दिस कैन थिंग इज कॉल्ड ग्रीन स्टेट ऑफ द क्ले। सेकंड, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये किसी भी टेम्परेचर रेंज पे आप इसको एक्सपोज कर दें तो ये अपनी स्टेट को लूज़ नहीं करता, मतलब जो जो इसका शेप बना होता है वो ख़राब नहीं होता। तो इसको फिर सेकंड स्टेज में हम टेम्परेचर को एक्सपोज कर देते हैं, तो इससे इसकी जो शेप बनी होती है वो बिल्कुल रिफाइन हो जाती है और हार्ड भी बन जाती है। In addition to the principal raw materials, a wide variety of other minerals, salts, and oxide is used as fluxing agent and special refractory ingredients. अब ये नहीं है कि हम सिरामिक्स में कह दें कि हमारे पास सिर्फ ये तीन चीज़ें होती हैं, क्लेस, टेम्पर और मिनरल्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है सिरामिक्स में। Some of the more common fluxing agents, इनको हम fluxing agents कहते हैं, जो इनके अलावा हम डालते हैं। Some of the more common fluxing agents that lower vitrification temperature, melting temperature और reaction temperature are। अब fluxing agents कौन कौन से हैं? Fluxing agents का काम क्या होता है? या तो ये टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, या मेल्टिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, या रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। फ्लक्सिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज बोरैक्स, second one is boric acid, soda ash, sodium nitrate, pearl ash, nephelines, cyanate,
calcined bonds, apatite, fluorspar, cryolite, iron oxide, antimony oxide, lead oxides, lithium minerals and vanadium minerals. These are the most common fluxing agents. मतलब आप इनमें से कोई एक fluxing agent डालेंगे तो उससे कुछ property increase या decrease होगी ceramics में. तो उस property से एक नया ceramic बनेगा. So this thing is, these are the fluxing agents which are usually added. Even you may see the bones as well. बोन्स भी डाले जाते हैं इनमें, ठीक है. तो इससे आप देख सकते हैं कि कैल्साइन बोन्स जो हैं इससे भी बहुत सारे सिरामिक्स बने जाते हैं, लाइक बोनी सिरामिक्स जो होते हैं वो आपको नज़र भी आते हैं. सो सिरामिक्स कैन बी मेड फ्रॉम द along with these things, glass, temper and minerals. So these fluxing agents are also imparting some characteristic properties to the ceramics. Some of the more common special refracting ingredients are also added. मतलब इसके अलावा भी कुछ और मटेरियल्स भी डाले जाते हैं जिनको हम रिफ्रैक्टरी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. और ये इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? एल्यूमिना, ओलेविन, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, लाइम, जिरकोनिया, टाइटेनिया, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट्स या टाल्क इसको कहते हैं. सो दिस थिंग इज रिफ्रैक्टरी इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स हैं इनमें जो हमारे पास इंक्लूडेड हैं वो एल्यूमिना है, एल्यूमिन, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, जिरकोनिया, टाइटेनिया और हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट जिसको हम टैल्क भी कहते हैं. सो यू कैन ऐड दीज रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स एज वेल. नाउ the ceramics basic chemistry is how we can convert the ordinary clay into ceramics. So there are different steps. All ceramic products, वो तो बहुत आसान है. Generally all ceramic products are made by combining various amounts of the foregoing raw materials, shaping and heating to varying temperatures. मतलब सिरामिक्स की इंडस्ट्री तो बहुत इजी सी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं कि ये जितने मटेरियल्स होते हैं, जिस तरीके का सिरामिक आप बनाते हैं, सो उनको पहले प्रॉपरली कंबाइन करना है एक दूसरे के साथ. दूसरी बात, फिर जब ये मटेरियल कंबाइन हो गए हैं और इनसे एक बेसिक मटेरियल सिरामिक का बन गया, रॉ मटेरियल जो होता है वो बन गए, तो फिर इसको शेप करना, मतलब इससे आप क्या बनाना चाहते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज देन दिस शेप इज हीटेड अप और फायरिंग इसको कहते हैं. सो इसको फिर हीट करना. ये 3 स्टेप्स जो हैं ये सिरामिक इंडस्ट्री में होते हैं. These temperature may be as low as 700 for some or glazes or as high as 2000 for many vitrifications. मतलब सिरामिक्स इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो 2000 तक भी जाता है, लेकिन कम से कम टेम्परेचर जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. सो यू कैन कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल्स टू सिरामिक्स at the temperature starting from 700 and this goes up to 2000 degrees centigrade. Generally, such temperature cause a number of reactions which are the chemical basis for the chemical conversions. अब ये reactions जो हैं ये हम ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इससे कुछ chemical conversions होते हैं, और वो chemical conversions कौन कौन से हैं? नंबर 1, डिहाइड्रेशन. जब आप इसको हीट करते हैं तो इससे डिहाइड्रेशन होती है, वाटर लॉस होता है. केमिकल वाटर स्मोकिंग इसको कहा जाता है. एट 150 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड ये काम होता है. सो व्हेन यू आर हीटिंग अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये है कि यू आर परफॉर्मिंग डिहाइड्रेशन प्रोसेसेस. सेकेंड स्टेप दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एट 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिएक्शन होता है. कैल्सिनेशन में ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है मटेरियल से. थर्ड स्टेप मतलब थर्ड रिएक्शन जो केमिकल कन्वर्जन्स होती हैं
that is oxidation of ferrous iron and organic matter at 350 to 900 degree centigrade. अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना है सो वो 350 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. लाइक फॉर एग्जांपल फेरस आयरन जो है और ऑर्गेनिक मैटर जो है इनकी ऑक्सीडेशंस हो सकती हैं 300 से लेकर 350 से लेकर 900 सेंटीग्रेड तक ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होते हैं. सिलिकेट फॉर्मेशन एट 900 एंड हायर, मतलब अगर आप ये कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें मिल जाए और इससे सिलिकेट प्रोड्यूस हो जाए, सो दिस इज परफॉर्म फ्रॉम 900 एंड अनवर्ड टेम्परेचर. इससे आगे होता है. सो केमिकल कन्वर्जेंस जो जनरली सिरामिक्स में होते हैं वो उनमें ये 4 चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं. या तो ये डिहाइड्रेशन होगा, या कैल्सिनेशन होगा, या ऑक्सीडेशन, या सिलिकेट फॉर्मेशन रिएक्शंस होंगे. Some of the initial chemical changes are relatively simple, such as calcination of calcium carbonate and the dehydration and decomposition of kaolinite. Other reactions, such as silicate formation, are quite complex and change with temperature and constituent ratios. मतलब अगर जनरली इन रिएक्शंस को देख लें, ये जो 4 केमिकल कन्वर्जन्स हैं, सो जिनमें डिहाइड्रेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं या कैल्सिनेशन रिएक्शंस जो हैं, ये सारे जो हैं ये बहुत इजीली होते हैं. लेकिन जो सिलिकेट फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं ये थोड़े कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं. क्योंकि ये टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं फॉर सिलिकेट फॉर्मेशन, या जो कंस्टिट्यूएंट की रेशो है, मतलब हम क्लेज और अदर मटेरियल्स को जो मिलाते हैं सिलिकेट फॉर्मेशन रिएक्शंस के लिए, उनकी बेसिस पे भी ये रिएक्शन जो है ये बेस करता है और उस तरीके का सिरामिक बनता है. सो टेम्परेचर एंड कंस्टिट्यूएंट रेशो दे आर जनरली dominating, or they are depending, मतलब एक किस्म से हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं on these 2 factors, temperature and constituent ratios. Ceramic products are all more or less refractory, resistant to heat, and the degree of refractoriness of a given product is determined by the relative quantities of refractory oxides and fluxing oxides. मतलब जितने भी सिरामिक प्रोडक्ट्स हैं ये हमें मिल रहे हैं ये रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं, और ये रेजिस्टेंट टू हीट जो है ये इनमें ऑक्साइड से आती है. ठीक है. द प्रिंसिपल refractory oxides are SiO2, Al2O3, CaO, MgO, and with ZrO2 zirconia, TiO2, Cr2O3 and BeO used less commonly. मतलब रिफ्रैक्टरीनेस जो हम इसमें लाते हैं सिरामिक्स में, तो उनमें ये ऑक्साइड्स में से कोई एक ऑक्साइड्स होते हैं. द प्रिंसिपल फ्लक्सिंग ऑक्साइड्स आर Na2O, K2O, B2O3 and SnO2 with fluorides are also used as fluxes in certain compositions. Fluxing agents भी, मतलब fluxing oxides भी fluxing agents के तौर पे काम कर सकते हैं. The common ingredients of all ceramic product is clay, kaolinite usually, and therefore the chemical reactions which occur on heating clays are quite important. मतलब हम कहते हैं कि सिरामिक में जो जनरल इंग्रेडिएंट है वो क्ले ही है. सो ये सारे रिएक्शन जो हम कहते हैं कि ये हमने डाल दिए वो चीज़ें डाल दी, ये सारे रिएक्शन क्लेस में ही होते हैं और उसी से सिरामिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनता है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट kilns in detail in our next lecture. If you people have any question regarding today's lecture, you may ask.